Welcome to Rehabilitation Sciences YouTube channel. And I would request today's moderator, Dr. Sagun Agrawal, to please start the session now. Good evening, everybody. Welcome to the Rehabilitation Sciences. Thanks, Dham sir. Today, I am pleased to give the introduction of Dr. Mehul, Contractor, young, energetic academician. He is MPT Cardiopulmonary, in charge physiotherapy of Shri Madha Ram College of Physiotherapy. He is recently awarded with the Best Academician Award of West Zone of India in 2019 and the Best Academician Award from the INCP AIMS 2019. Along with this, he has got 7 Young Achievers Award. So this is a very good thing. I was asking of his age. He is 32 years of age and he has got up the 7 Young Achievers Award. And the another thing is, in the lifespan of this much of the time, he has dissected 35 cadavers and he has got the videos for that thing also. Along with this, in this recently lockdown, he has taken for the 30 webinars with the different experts, and he has arranged around 30 camps in the different rural and the tribal area. So I appreciate Dr. Mehul, all your works, and welcome to the Rehabilitation Sciences. We are eagerly waiting for your lecture. Thank you. Yes, good evening, one and all. I'm back again on the platform Rehabilitation Science, right, with the virtual platform, Facebook, YouTube Live. Well, yes. First of all, I would like to convey my regards, my thanks from the bottom of my heart to Shagun sir, Hardeep sir, and as well as last but not the least is the Dharam sir, Dharam Pandey sir. Yes, and in a capital and bold, I would like to convey my gratitude, my regards, the care for the person is Dr. Pintu sir. Yes, because he was the one, who introduced me to the rehabilitation science, and I'm in front of you guys, right? So yes, before I start with my topic, okay, this is the first time I'm coming on the platform with rehabilitation science. This lecture I'm going to dedicate to Harpreet sir, Dharam sir, Sagun sir, and Pintu sir. Yes, today is my lecture, the concept Paradoxical Pulse. I'm going to dedicate to all these 3 legend, Pintu sir also, right? So not wasting much of a time, sir has already introduced me. So let's start with the topic. Okay, the name of the topic is the Paradoxical Pulse. Okay, the name itself says that the Paradoxical Pulse. Okay, and the next place I have written related to pulse. So this topic is really related to the pulse. I come again. Listen to me very carefully. The topic is Paradoxical Pulse. Very clear and loud. The question to be asked, whether this topic, because it mentioned pulse over here, so this topic is related to the pulse, because the yesterday and day before yesterday I was sending the flyers to everyone and all. I was serving the things, and even I am also in a in charge principal. So many of the students has passed out and studied under me. So I know the thought process within that in the students. And the good faculty is the one who understand the thought process of the student first. उनके expectations क्या है? अगर वो पकड़ लिया जाए और वो अगर sort out कर दिया जाए ना, तो बच्चा कहीं का निकल जाएगा. So I would like to share one example. It is a live example of my own life to all the viewers. YouTube live. Okay. So I'll be in a Hindi and English, both language. So, a few people will be comfortable with the Hindi, few people will be comfortable with the English. So I'll come with a mixture of both. Okay. So once upon a time, when I was a student, what I used to think, जब मेरे पास ना medicine subject में, I think it was in the 3rd year, when this topic came in front of me, Paradoxical Pulse, what happened, in my brain, the thought process, कि यार चलो पैराडॉक्सिकल पल्स है, तो पैराडॉक्सिकल मींस हमें सब टीचर ने सिखाया कि कोई भी अगर चीज नहीं समझ में आती है तो वर्ड को ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद उसका मीनिंग निकाल दो.
तो आपको मीनिंग पता पड़ेगा, राइट? सो द सेम प्रोसेस मेरे ब्रेन में था, मेरे थॉट प्रोसेस में था, मेरे जहन में था, तो आई वाज गोइंग विद दैट। मैंने वर्ड को ब्रेक कर दिया, पैराडॉक्सिकल को सेपरेट रखा और पल्स को सेपरेट रखा। तो पल्स तो फिर आप पता पड़ गया कि भाई ये जो हम रेडियल पल्स ले रहे हैं, ठीक है, कैरोटिड पल्स, टेम्पोरल लेते हैं, डॉर्सालिस पीरियड लेते हैं, फ्यूमरल लेते हैं, सो द पल्स वो दिमाग में आ गया, ठीक है। पैराडॉक्सिकल मतलब मैंने थोड़ा बहुत मतलब अब मैं ठहरा, आई आई बिलोंग्स टू गुजराती मीडियम, ठीक है। सो आई व्हाट आई यूज्ड टू कीप इंग्लिश टू गुजराती डिक्शनरी। So whatever the word comes, no, I used, if I don't get it, ठीक है, even if my faculty taught me very well, okay, but even if I don't get it, because my medium of instruction was in Gujarati throughout the whole my +2 classes, so I used to take in a dictionary. तो paradoxical मतलब था मतलब against the nature, मतलब nothing normal, it is against the nature, that is the reason it is disease. It's not a normal condition, right? सो वो कुछ फ्रेंड्स थे, ग्रुप स्टडी होती थी, डिस्कशन होता था, हेल्दी डिस्कशन इन आवर टाइम, there was a healthy discussion. Nowadays the students are doing the study their own, few people are studying in cluster, but in our times healthy discussion was quite more, right? So मैं फ्रेंड्स लोगों से डिस्कस करता था, तो मेरे थॉट प्रोसेस क्या था पता है, कि पल्स जो है ना वो अबनॉर्मल हो जाते होंगे, मतलब पैराडॉक्सिकल अगेंस्ट द नेचर पल्स। मतलब ऐसा होता है, एक फ्रेंड ने मेरे को क्या आंसर दिया पता है? वन ऑफ माय फ्रेंड सेड दैट, सी मेहुल, we heard pulse. I said yes, we heard pulse. We palpate them. Yes, we palpate them. Okay, so let's talk about if we go with the radial pulse. If we go with the radial pulse with the help of this three finger, if we are going with that, see, every stroke of the left ventricle, the blood is ejected out. I repeat, every stroke of the left ventricle, okay, the blood is ejecting out into the system by opening of the aortic valve, and then the blood is entering into the aorta. Basic first year physiology, correct? Now what is happening, the moment the blood is ejected out, then ascending aorta, then arch of aorta, then descending aorta. तो जो arch of aorta है ना, वहाँ पे हमारी ऐसे 3 branches है. If you can see my this 3 finger, we have 3 branches. One is the right side, one is the middle, and one is the left side. The left side वाली left subclavian है, left side को जाती है, upper limb को जाएगी. One is the left common carotid है, जो ऊपर head and neck में जाएगी, and this one is the right brachiocephalic trunk. This one, the right one, my index finger is the brachiocephalic trunk, तो जो right side of the body में लेके आएगी, करेक्ट? ठीक है, तो ये होगा अपर लिम्ब का और हेड एंड नेक का। लोअर लिम्ब एंड अब्डोमेन का क्या? तो जो डिसेंडिंग थोरासिक अयोर्टा है या डिसेंडिंग अयोर्टा एंड देन थोरासिक एंड देन डाउन टू अब्डोमिनल अयोर्टा, फिर वहां पे सारी वो मेसेंट्रिक ब्रांच देगी, मेसेंट्रिक मतलब मेसेंट्री अब्डोमिनल सारी ब्रांच देगी, एंड देन लोअर डाउन टू दी आपकी फीमोरल आर्टरी सारी, देन वी नो ऑल द एनाटॉमी। तो दिस इज व्हाट द नॉर्मल, मेरे फ्रेंड ने मेरे को समझा था कि ऐसा होता है। आई सेड ओके यस ऐसा होता है। तो बोलता है कि नॉर्मल पल्स हम जो पढ़ते हैं ना, तो वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, okay, the blood is ejected out through the stroke, and through the stroke the blood is filled with the the pulsation. The moment of the blood is filled by us, okay, the moment of the blood is filled by us with the moment of the pulsation. That is what we are palpating over here, but that is normal में। now paradoxical means कि अगर वो पल्स आपको मतलब जैसे हार्ट बीट किया और बाहर आया और यहाँ पे पल्स मिलना चाहिए ना, वो तब नहीं मिलता है, तो शायद वो अबनॉर्मल हो गया, तो उसको पैराडॉक्सिकल अगेंस्ट द नेचर। नेचर क्या कहता है? व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल गो फॉर एन सिस्टोल और एन कंट्रैक्शन, एट दैट टाइम द ब्लड इज इजेक्टेड आउट एंड the blood is coming into the the I would rather say left subclavian to axillary to brachial to cubital fossa to radial and ulnar. This is the radial aspect, this is the ulnar aspect. Okay, so this is the ulnar aspect medial and this is the radial aspect lateral, and over here we see the pulse. तो जो स्ट्रोक से बाहर निकला है यहाँ पे पल्स मिला ना, so during the ventricular systole we get the pulse, during the ventricular diastole we may not get the pulse, but अगर आपको डायस्टोल पे पल्स मिलने लगा तो शायद वो कह सकते हैं कि पैराडॉक्सिकल, क्योंकि अगेंस्ट द नेचर हो गया ना। यूजुअली सिस्टोल में मिलता है, डायस्टोल में मिलने लगा हमें, ड्यूरिंग द डायस्टोल वी सी द पल्स, तो हो सकता है कि वो पैराडॉक्सिकल पल्स हो सकता है। सो दैट वाज द वन थॉट प्रोसेस व्हिच वाज फेड इन माय ब्रेन ड्यूरिंग माय कॉलेज लाइफ व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर बीपीटी। अब उस टाइम तो क्रिटिकल थिंकिंग हम करते नहीं थे ज्यादा,
ठीक है, बट स्टिल यू नो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। कुछ लोग बोलते हैं कि पल्स कुछ अबनॉर्मल हो जाते होंगे, कुछ नहीं मिलते होंगे, कुछ पल्स में मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, उसकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए, वो ऑल्टर्ड हो जाती होगी। सो समथिंग व्हिच इज गोइंग अबनॉर्मल रिलेटेड टू द पल्स एंड सो कॉल्ड एज एन पैराडॉक्सिकल पल्स। So these are the myths, I would say, not the facts. These are the myths which is going on in many of the students, those who are listening me right now. And if you are student, you can make correlate. See, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, तो यू कैन कोरिलेट कि हाँ यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे फ्रेंड ने भी मेरे को कुछ ऐसा बताया, मेरे कलीग ने कुछ ऐसा बताया था, मेरे 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 कुछ दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा बताया था। तो कहीं ना कहीं पल से रिलेटेड तो ऐसा कुछ लग रहा है। So that is the reason I mentioned over here. Whether it is related to the pulse, answer of the question I will give at last. Okay. For that you have to be with me. Yes. So let's start with the topic paradoxical pulse. Okay. So now before I go with the paradoxical of pulse, I would like to mention the blood pressure graph. Okay, before I go with the paradoxical pulse, I would like to mention the graph of the blood pressure, that diastolic pressure. Let's assume a normal statistics, that is the 120 by 80. 120 is an systolic and 80 is diastolic. We all know. Okay, so how the things are occurring? If I show over here on a graphical representation, okay, this is the vertical line which shows the blood pressure. Okay, this is the vertical line which shows the blood pressure. This the line downward and this the line upward. This is the line downward and this is the line upward. Okay, this is, let's consider 120 and this let's consider 80. So this one is the diastolic pressure and this one is the systolic pressure. Now, if we assume that, okay, if we assume that the graph, okay, so how it comes, see, from the diastolic 80, 120, then again back to 80, diastole, then again systole, 120, then again back to diastole, 80, then 180, then again 120, then 80, then again 120, then 80, then again 120, and then 80. So one thing that I want to make a statement very clear. This is the 80 mm of Hg, this is 120 mm of Hg, and if we see the blood pressure graph, it start diastole then 80. Okay, यहाँ पे graph बढ़ता जाएगा 90, 100, 110 and 120. So it reaches up to the 120, then it brought down ventricular diastole, then ventricular systole, then ventricular diastole, systole, diastole, systole, diastole. ठीक है, so 80, 120, 80, 120, 80, 120, 80, 120. See, this is how the whole graph goes like this. Correct? Right? I want to make certain change in it. Okay? But that I will not make it right now. Because why? The reason behind that, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हो ना, ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ. The one thing that I want to make a statement very clear is, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ठीक है, this is absolutely wrong. This is absolutely wrong. अभी तो आपको सच लग रहा था ना कि मेहुल सर ने ड्रॉ तो कर दिया यार, क्या एक ग्राफ बता दिया, 80 डायस्टोल से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. But this is wrong. Okay, what is correct? To know the correct thing, first thing you need to understand the, you know, the basics thing first. ओके, सो बेसिक समझने के लिए आपको कुछ फंडास क्लियर करने पड़ेंगे. तो एक बेसिक फंडा जो मैंने आपको बताया, जो मिथ्स होते हैं, ये मिथ्स है. दिस इज कॉल्ड एज एन मिथ्स. नाउ आई विल एक्चुअली टेल यू दैट हाउ इट अकर्स. तो ये बताने के लिए अब मैं पूरा आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, और वो कंसेप्ट मेरे साथ जुड़े रहिए. आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जिसको मैं प्रूव करूंगा कि ये मैंने गलत किया था और मैंने सही किया है. ठीक है, एंड देन यू विल एनालाइज कि हाँ यार, दिस वाज पहले लगा कि करेक्ट, बट दिस वाज नाउ दिस इज करेक्ट. ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इसको अच्छे से समझने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा. वी नीड टू listen to me very carefully.
we need to correlate blood pressure mainly systolic. Forget about diastolic right now. I repeat, we need to correlate the blood pressure mainly systolic with respiratory cycle. Yes guys, आपको ये कुछ नया लगेगा. If you are listening to me, please make a note of that. Sit with your pen and note, make a note of that कि blood pressure को हमें respiratory cycle के साथ connect करना है. और अगर वो connect करके जो concept मैं अब evolve करूंगा, अगर आप अच्छे से note down कर ले तो paradoxical pulse is over for you. राइट बट यस कहाँ पे फिर चेक करना है, किस तरह से करना है, वो बाकी रहेगा. बट पैराडॉक्सिकल पल्स आपको समझना चाहिए. सो बी विथ मी, सिट विथ द पेन एंड नोट. राइट, सो यस, वी हैव टू catch the blood pressure in context to the respiratory cycles. Okay, yes. So now let's assume that this is the right side of the heart and this is the left side of the heart. Yes, the right side I'm showing with the blue pen, and the left side I'm showing with the red pen, because red, this is oxygenated, blue, this is deoxygenated. Okay, then here I would like to mention a septum which is in black in color, which I will make it a bit thick also. So septum you can identify quite nicely. So in between there is an interventricular septum and interatrial septum, right? So this is the septum. So once the septum is done, okay, I'll come up with the valves. Okay, so the valve I will mention with the the AV valve. AV valve I will mention with the green color, a bit thick, so that you can identify quite nicely. A thick valve. Okay, it is not a characteristic, just to show you, so don't get me wrong. Okay, so I hope it is visible, right? And here this is the mitral valve. Right side it is tricuspid valve, left side it is mitral valve. Okay, in this right now I'm not showing you the pulmonary artery and the aorta. Right now I'm not showing it. Okay, so just be with me. Okay, so what is happening? See, again, this is the right atrium, this is the left atrium, this is right ventricle, this is left ventricle, this is the mitral valve between the left atrium and left ventricle, this is the tricuspid valve between the right atrium and right ventricle. In between there is a septum. This is the interatrial septum, this is the interventricular septum. Clear? I have not mentioned the pulmonary trunk and aorta. So that you need to be clear right now. Now, what is happening? Understand one thing. During inspiration, okay? Now, what is happening during inspiration? Be with me. The moment through the C2, C3 phrenic nerve get an impulse into the diaphragm. From the C2, C3, when through the phrenic nerve, when we get the impulse into the diaphragm, it gives an idea that the diaphragm has to go for a contraction, right? Okay, so once the diaphragm get an impulse and action potential get generated, the diaphragm, it is like in a dome shape. Okay, it is like in a dome shape. This is the right side, this is the left side. So dome shape diaphragm is getting flattened by going down. This is back. So this is inspiration, flatten down, this is expiration, this is inspiration, flatten down, this is expiration. So now see what I'm going to do is यहाँ पे blood pressure को मैं अब respiratory cycles के साथ connect करके आपको मैं pulses paradox को यहाँ पे graph के साथ बताऊंगा. That is my idea. Okay, so it is a, if you feel that कि सर ये थोड़ा critical लग रहा है, कहाँ respiratory cycle, कहाँ blood pressure, कहाँ वापस ये graph थोड़ा difficult लग रहा है, let me tell you guys, be with me, it is very easy. Okay, if you listen, if you catch my each word, right? Okay, so I come again. During the inspiration, what is happening? The phrenic nerve is sending an impulse to the diaphragm and going for an action potential, and hence the diaphragm is going for a contraction and diaphragm is descend down.
जैसे डिसेंड डाउन होता है तो क्या होता है पता है, thorax expand and thorax expand. Along with that, diaphragm descend down, become flat, and intrathoracic pressure, because volume of the thorax has been increased. Okay, vertical and lateral both. Vertical and lateral. Okay, the diameter has been increased. So 10 standard का हमारा basic science, ठीक है, 10 standard का या फिर उससे भी पहले का जो हमने पढ़े थे, when the volume is increased, pressure is decreased. Correct? The volume is the increase. See, thorax expand vertically and laterally. So due to that expansion, there is enough pressure falls down in the thorax. Pressure falls down in the thorax. Because of that, what is happening? The moment the pressure falls, we suck the air in. Because the pressure is negative, so atmosphere is having a positive pressure, we suck the air in. If it is normal, through nose. If it is abnormal and gasping the air like in a COPD or asthma, it is through mouth. Clear? Right? But that is the respiratory system. Keep it the things apart. Back to the topic. Again, when the intrathoracic pressure is getting decreased because increase in the volume of the thorax, which makes the thorax negative in a pressure, because the volume has been increased vertically and lateral. And hence what is happening, guys, moment it occurs in the negative pressure, we suck the air in from higher concentration to lower concentration. And that is how the inspiration occurs, right? Okay, but what is happening now? I am coming towards the blood now. Okay, we all know that the diaphragm is having a multiple openings. Okay, because see, this is the barrier between the mediastinum and the abdominal cavity. So this act as a barrier. तो नीचे से ऊपर जाते स्ट्रक्चर, ऊपर से नीचे आते स्ट्रक्चर, तो उसके लिए 5 मार्क की एनाटॉमी की थियरी थी फर्स्ट ईयर में हमारी, याद करो, ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम. हमारी abdominal aorta नीचे जाती है तो सुपीरियर वेने सॉरी इंफीरियर वेने का नीचे से ऊपर आती है, तो फ्रेनिक नर्व नीचे जाती है ना, पोर्टल वेन सारा ये सब इसोफेगस नीचे जाता है, ठीक है. तो डायफ्राम के मल्टीपल ओपनिंग्स है ना. तो एक ओपनिंग जो है ना, वो एक ओपनिंग है हमारा इंफीरियर वेना केवा के लिए. सो इट विल बी लाइक दिस. See, this is the dome of the diaphragm. ठीक है, I'll show it over the and with the blue pen because it's a vena cava. Yes, blue pen. It's a with the vena cava. This is the dome of the diaphragm. The right side I'm showing. So it is coming from the below aspect, and see what is happening. Piercing the diaphragm, and it comes up. This is how it comes. This is the right side of the dome of the diaphragm. So inferior vena cava dragging the blood, draining the blood from the abdomen as well as the lower limb. Abdomen as well as the lower limb, both the lower limb, inferior vena cava, caval system में आता है blood, piercing the diaphragm. That is the opening of the diaphragm, holes of the diaphragm, and then entering into the right atrium. Basic anatomy, correct? है ना. So क्या हो जाता है? The same way क्या हो जाता है? Superior vena cava, उसमें कौन सा आता है आपका? जुगुलर वेन का ब्लड, ठीक है. उसमें आपका आता है जुगुलर वेन. जुगुलर वेन आपको नेक की एनाटॉमी आपको अच्छे से आनी चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन. सो जुगुलर वेन का ब्लड बोथ द साइड से, ओके, एंड देन ड्रेनिंग इनटू द superior vena cava, and the superior vena cava entering into the right atrium. Now let me tell you, ये बेसिक एनाटॉमी मैंने आपको बताई साथ, ताकि आपको आप मेरे साथ मैच कर सको, आप मुझे कोरिलेट कर सको सारी चीजों को. तो जैसे अब थोरासिक प्रेशर बढ़ गया था, इंट्राथोरासिक प्रेशर डाउन हो गया था, एयर सक अंदर हुई, तो सेम वे क्या आपको नहीं लगता है कि इंट्राथोरासिक प्रेशर नेगेटिव होने की वजह से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा विल ब्रिंग द ब्लड मोर इनटू द हार्ट? I come again. Same way, the air sucks in due to the thoracic pressure has become more negative or more decreased. Okay, the same way, the blood which is coming from the lower body and from the upper body, it will bring back to the heart back quite more compared to normal. Make a note of that, right? So during inspiration, what is happening? A very clear-cut funda that due to the intrathoracic pressure becomes negative, the peripheral pulling of the blood towards the center. So periphery में जो blood था ना, उसका pulling towards the center is getting increased because the thoracic का pressure negative हो गया है. So during the inspiration, we are getting the more blood venous return into the heart, mainly in the right atrium, mainly in the right atrium. So the moment it comes into the right atrium, okay, क्या हो गया अब? Right atrium is overloaded with the volume.
the right atrium is overloaded with the volume, क्योंकि blood ज्यादा आया अंदर, है ना? So वो over volume जो होता है ना, वो कैसे होता है? See, I'll show you with the blue pen. See, this is the overloaded. I can show you, this is the overloaded right atrium, because during the inspiration, the blood comes very rapidly due to the negative pressure in the thorax, and hence this is what the normal physiology. You need to understand, students, you need to, catch my each word, that this is the normal physiology. आप में भी होता है, मेरे में भी होता है, टेंशन मत लेना, है ना? कोई abnormality नहीं है ये कि सर तो पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग पढ़ा रहे, पैराडॉक्सिकल पल्स पढ़ा रहे और abnormality आ रही है, ऐसा नहीं है। ये मेरे में भी होता है, आप में भी होता है, सब में होता है इनिशियली, ठीक है? So the venous return will be quite more. Okay, so if I show over here, so see, this is the arrow which mentioning that the venous return is quite more. Okay, and because of that, what is happening? Because of that, the right atrium is become the volume overloaded. Volume क्या है? Blood है, overloaded हो गया, right? Yes sir, हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes sir, समझ में आ गया। Very good, right? So see, I can show you the arrow that venous return अब ज्यादा है, and because of that, now understand what is happening. That volume overload, the moment this tricuspid valve get open during the cardiac cycle, when the ventricle is going for a contraction. Okay, so now I'll show you the ventricle की musculature. So right side पे a bit thick musculature and left side पे, sorry, right side पे a bit thick and the right side पे a bit thin. So left side पे thick होता है और right side पे thin होता है. So this is the musculature that you can identify of the myocardium. This is a piece of the myocardium, wonderfully it is there, and this is the right ventricle myocardium, which is, I have mentioned, thin. Guys, if you can see my diagram, this is the thin, this one is the thick, okay, and this one is the thin. Okay, so this is what I have mentioned. So the moment the ventricle contraction occurs, okay, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि पूरा ब्लड जो है पहले तो नीचे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, ब्लड पहले बहुत ज्यादा नीचे ज्यादा आएगा, एंड देन वेंट्रिकल अकर्स कंट्रैक्शन, एंड यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में जाएगा ब्लड, और लेफ्ट साइड से अयोटा से वो सिस्टम में चला जाएगा ब्लड. फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इट विल गो इनटू द अयोटा फॉर द सिस्टम. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द ब्लड प्रेशर. ओके, सो स्लोली सो क्या हो जाता है, द फर्स्ट कंसेप्ट दैट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर इज the moment the major amount of blood is coming into the now right ventricle, जो right atrium में major amount of blood था, वो जब right ventricle में major amount आ जाता है, okay, so this is the column of the blood which is in the blue pen I'm mentioning. okay, और जब जैसे ventricle में blood आ जाता है ना, I will close the tricuspid valve in meantime. See, a lot of blood, okay, and the mitral valve is now the tricuspid valve is now closed. So if you can see, guys, I have closed the valve. Okay, so now what is happening now? See, the whole right atrium blood has come down. अब डाउन आने की वजह से अब ये नॉर्मल ब्लड नहीं है, ये मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ओवरलोडेड वाला ब्लड है, जो इंस्पिरेशन के वजह से, इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से ज्यादा आया, नॉर्मल से भी ज्यादा आया, है ना. सो जैसे ये ज्यादा आया ना ब्लड यहाँ पे, व्हाट इट मेक्स, नॉर्मली हम सब में होता है, सो डोंट वरी, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली व्हाट इट मेक्स, दिस ventricle right side, it gets expanded in all the direction, downward side पे, this side पे, right side पे, and the septum side पे. Okay, it will get stretched in the all the direction. So the direction, okay, that if I show you with the black pen,
Okay, so it will get stretched in this direction, it will get stretched in this direction also, because volume overload hai na guys, right? So it will get stretched in this direction also, then it will get stretched in this direction. यहाँ पे आपका पेरिकार्डियम भी बाहर होता है, ठीक है? This is just a direction that I am showing. So it gets stretched in this direction, and very importantly, now see guys what I'm drawing. It will push the septum, specifically interventricular. So it will push the septum towards the left. So yes, I come again. If you can see the diagram, what I have, yes, what I'm trying to show you guys, that due to the volume overloaded, now the volume is more in the right ventricle, because during the inspiration blood came back more venous return. So it will stretch the right ventricle in a right side, it will stretch the ventricle in a oblique downward, it will stretch the right ventricle towards the downward. यहाँ पे आपका pericardium बाहर रहता ही है, ठीक है? And then another it will stretch towards the septum. Okay, towards the septum. तो जैसे septum को stretch करता है ना, ठीक है? तो क्या हो जाता है? See, the moment it gets stretched, it's like, you know, I'm pushing someone, right? I'm pushing someone. The moment I push someone, क्या हो जाता है? Septum जो है ना, very mild and moderate. I repeat, very mild and moderately it will shift. It will shift towards the left, from the right to left. Okay, ये shunting की बात नहीं चल रही है, सिर्फ septum को pressure आ रहा है to the blood column. ठीक है, तो उसको मैं अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिखाऊंगा. ठीक है, so septum किस तरह से अभी shift हो रहा है देखो. So see, I have drawn the diagram. That blue color, okay guys, make a note of that. और जो मुझे यहाँ पे अभी लाइव सुन रहे हैं, प्लीज आप प्रैक्टिस करिए डायग्राम के भी. यू विल एंजॉय, यू विल बी थरोली विथ मी थ्रू आउट टिल द एंड. सो दिस ब्लू कलर सेप्टम दिखा रहा हूं, जो राइट साइड से पुश होने की वजह से अब लेफ्ट साइड की तरफ आ गया. तो कैन यू सी दैट कि पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कैविटी की जो डायमेंशन थी अब रिड्यूस हो गई ड्यू टू द पुश फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. ठीक है, the left ventricle cavity has become narrowed, it has been reduced. So अब वहां पे जो blood आएगा through the lungs from the pulmonary system, pulmonary vein, right, left, superior, inferior, 4 pulmonary vein, right and left. Okay, superior, inferior. So right side की superior, inferior, left side की superior, inferior, pulmonary veins bring the blood into the left atrium. तो लेफ्ट एट्रियम से जब वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी हाई और मोर, लेस. इट विल बी लेस. कैसे लेस होगा अभी मैं आपको समझाता हूं. दिस इज नंबर 1, फैक्टर नंबर 1. सो फैक्टर नंबर 1 इज व्हाट, दैट द सेप्टम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड it will occupy the space of the left ventricle and left ventricle become narrow. नंबर 1. नंबर 2 लिखो अभी आप कि क्या आएगा. सी, अब क्या हो जाता है, we all know that the lung is having a compliance. Lungs are compliance in nature, तभी तो वो stretch होते हैं ना, Herring-Boehm reflex, right, superficial receptors. So lungs are compliance. तो compliance की वजह से क्या होता है, इंस्पिरेशन के लिए तरफ एक्सपैंड होता है, एक्सप्रेशन की तरफ श्रिंक हो जाता है, इंस्पिरेशन की तरफ एक्सपैंड, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की तरफ श्रिंक हो जाता है. ठीक है, अब हमने ये सारी एक्टिविटी इंस्पिरेशन की बताई है, तो अब लंग एक्सपैंड है ऐसा मान के चलो. लंग इज एक्सपेंडेड, मतलब वॉल्यूम ऑफ द लंग इज आल्सो गेटिंग इंक्रीज. सो द वॉल्यूम ऑफ द लंग गेट इज इंक्रीज. तो वॉल्यूम ऑफ द लंग जो है, तो अंदर
इंट्रा जो लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है, ठीक है, इंट्रा प्रेशर विच इज देयर इन द लंग, ओके, तो वो क्या कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तभी तो एयर स्टॉक्ड इन होता है, बिकॉज प्रेशर इज लेस इन द लंग्स। अब लंग्स को साइड पे रख दो, एयर पॉकेट को याद करो। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर पॉकेट मींस एल्वियोलाई, डोंट गेट मी रॉन्ग सर, ये नया वर्ड कहां से लाए, एयर पॉकेट मींस एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई भी क्या है, उसके पास स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इसलिए तो वो इन्फ्लेट डिफ्लेट इन्फ्लेट डिफ्लेट इन्फ्लेट डिफ्लेट करता है। तो अब क्या हो जाता है, जैसे वो इंस्पिरेशन में लंग्स एक्सपेंड हुए, एयर पॉकेट इन्फ्लेट हुए और एक बलून की तरह एक बना हुआ है एयर पॉकेट, ठीक है। तो नीचे जो हमारी यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये सारा ब्लड लेके जो लंग्स में जा रही है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एसआई फॉर द राइट लंग, यहाँ पे लेफ्ट लंग में हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और देन वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे लेके आएगी, कैपिलरी के पास। कैपिलरी में क्या होगा, एल्वियोलाई होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि जैसे एल्वियोलाई जो है, सॉरी, जैसे लंग्स एंड एल्वियोलाई जैसे स्ट्रेचेबल है, उसी तरह से हमारी आर्टरी एंड वास्कुलेचर भी बहुत स्ट्रेचेबल है। वासो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन, कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन, कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन। तो उस टाइम लंग में जब एक्सपैंड हुआ है, तो उस टाइम वास्कुलेचर क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा कि डायलेट होगा, ऑफ कोर्स डायलेटेशन, ठीक है। क्या होगा, ऑफ कोर्स डायलेटेशन होगा। द मोमेंट इट विल डायलेट, okay, the moment it will dilate, what will happen, okay, it will hold the blood more, okay, it will hold the blood more into the lungs, okay, it will hold the blood in the lung more, okay, and because of that the venous return, the जो ब्लड का जो वेन से, जो पल्मोनरी वेन से जो रिटर्न यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आना चाहिए, वो नहीं आएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, okay, because of that what will happen, the more less amount of blood will come, okay. Guys, just one moment, I'm coming back, okay, just yes, sorry for the interruption. So क्या हो जाएगा कि पल्मोनरी वास्कुलेचर हैज बीन डायलेटेड हो जाएगा, तो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड वो अकोमोडेट तो कर पाएगा, बट उसके आगे वो नहीं जाने देगा, क्योंकि वो डायलेट हो चुका है। इट विल होल्ड द ब्लड मोर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, okay, it will hold the blood during the inspiration, and that time the blood from the lungs into the pulmonary vein, it will not return, the blood will not return in a normal way, okay, it will hold the blood more and it will not come in the normal way, थोड़ा कम आएगा, the blood will come a bit less, ठीक है, बट इतना भी लेस नहीं होगा कि पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाए, बट वो लेस आएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, नंबर 1 के सेप्टम शिफ्ट हुआ, नंबर 1 के सेप्टम शिफ्ट हुआ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का डायग्राम डिक्रीज हो गया। एंड नंबर 2 के लंग्स में पल्मोनरी वास्कुलेचर डायलेट होने की वजह से वहां पे जब ब्लड को ज्यादा होल्ड कर रहा है, और ज्यादा होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये सिर्फ इंस्पिरेशन की बात चल रही है, सो ज्यादा ब्लड होल्ड किया यहाँ पे, तो अब ब्लड जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आएगा वो कैसा आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है। सो नाउ विद द रेड पेन ऑक्सीजनेटेड I will show you the blood, but not like the right side. Blood, but not like right side. See, so I have shown the blood, okay, I have shown the blood, but not like the, right side, okay, and hence क्या हो जाएगा, नंबर 1 ब्लड लंग्स में से कम आया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, क्योंकि वो ज्यादा होल्ड करके रखता है। नंबर 2 सेप्टम शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड हेंस देयर विल बी ना लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, there will be na less amount of blood in the left ventricle during inspiration. I repeat, there is a less amount of blood during the inspiration. अब क्या होगा, जैसे blood atrium से ventricle में आ गया, I will close the mitral valve now. So there is a closure of the mitral valve between the left atrium and left ventricle. So there is a closure of the mitral valve. See, so अब closure हो चुका mitral valve का, okay, blood अब left ventricle में है. Now
guys, I want you to answer on your own. मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ, but you know, answer should be very loud and clear. नंबर 1, सेप्टम शिफ्ट हुआ, कैविटी नैरो हो गई. नंबर 2, ब्लड रिटर्न नहीं आया क्योंकि लंग्स कंप्लायंस से एक्सपेंड हुआ, वास्कुलेचर एक्सपेंड होकर ब्लड ने वहां पे ही होल्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. एक्सपिरेशन में मैं बताऊंगा क्या होगा अभी, ठीक है. तो वो अब रुक के आएगा थोड़ा ब्लड, तो ऑलरेडी ब्लड कम हो गया वापस और ऑलरेडी स्पेस यहाँ पे कम थी. व्हाट विल बी द कार्डियक आउटपुट, हाई और लो? You can put your answer in the chat box of YouTube. Yes, be loud, be clear. The concept is crystal clear that the cardiac output will be less. And the moment the cardiac output will be less, क्योंकि यहाँ पे क्या है, contraction will not be forceful. Due to that, there will be a less amount of ejection fraction will go out, and due to, because end diastolic volume कम है, the amount of volume of the blood which is there in the left ventricle is called as an end diastolic volume. Okay, before systole. सिस्टोल होने से पहले, कंट्रैक्शन होने से पहले जो ब्लड कैविटी में यहाँ पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. क्यों? डायस्टोल खत्म हुआ, ठीक है. यहाँ पे एट्रियल का कंट्रैक्शन चल रहा था सिस्टोल, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, डायस्टोल चल रहा था. तो द मोमेंट द डायस्टोल इज गेटिंग ओवर, तब जो ब्लड रह गया उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, है ना, एट द एंड ऑफ द डायस्टोल. तो जो वॉल्यूम जो है वो भी रिड्यूस्ड है. मायोकार्डियल कंट्रैक्शन स्ट्रेच नहीं होगा, फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कम है. तो ड्यू टू द लेस वॉल्यूम, the myocardium will not stretch more, and it will not stretch more, it will not forcefully contract. Frank Starling's law. Due to the end diastolic volume is less, the left ventricle is not get stretched much, so there will be no forceful contraction, and hence ejection fraction will be less, stroke volume will be less, and at the end cardiac output will be less. So if the cardiac output is less, what will be the systolic pressure? 120? No, it is less than 120, right? It is less than 120. तो आप बोलोगे सर हमारा तो आइडियल ब्लड प्रेशर 120 हमने पढ़ा है बुक में, ठीक है, तो क्या वो अबनॉर्मल है क्या? नो, इट इज नॉट अबनॉर्मल, इट इज एन एवरेज ब्लड प्रेशर. इट इज एन एवरेज ब्लड प्रेशर, इट इज नॉट आइडियल कि इतना होना ही चाहिए. इट इज एन एवरेज. आपका 118 है तो भी ओके है, 100 आपका 15 है तो भी ओके, 124 है तो भी आप ओके हो. Okay, that is based on the body mass index. That is something different topic, but you are okay because it is in a range, average range which has been taken over there. Okay, it is in a average range which has been taken over there. So आपका blood pressure systolic is falling down. At the moment the blood pressure systolic is falling down, आपका 120 नहीं आएगा blood pressure during inspiration. अगर आपने blood pressure अच्छे से measure किया है तो, and I challenge, yes. So during inspiration, this is the whole process occur. Okay, make a note of that. Now let me come to the expiration now. Okay, respiratory cycle. See, normal physiology of the heart, ठीक है, फिर क्या क्या चीजें होती है, and then उसको मैंने respiratory cycle में inspiration के साथ जोड़ दिया. You getting my point? मैंने इंस्पिरेशन के साथ उसको जोड़ भी दिया, राइट. अब एक्सपिरेशन की बात करते हैं, जो रेस्पिरेटरी के साइकिल का जो सेकंड हाफ है एक्सपिरेशन. तो एक्सपिरेशन में क्या हो जाएगा, डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था, इट विल गो फॉर इन अ डोम शेप. सो thoracic cavity shrink, dome of the diaphragm is back from the flattened position, it is like in a dome. Thoracic cavity decrease. So जो अब आपका जो वर्टिकल एंड लैटरल एक्सपेंशन जो हुआ था थोरैक्स का, वो अब श्रिंक हो गया. सो देयर विल बी लाइक जो पॉजिटिव प्रेशर था वो सॉरी नेगेटिव प्रेशर था वो पॉजिटिव होगा. एरिया बढ़ गया था तो नेगेटिव प्रेशर था ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. एक्सपिरेशन में अब श्रिंक हुआ तो एरिया कम हो गया. एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. जैसे देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का एरिया अभी कम हो गया ड्यू टू सेप्टम शिफ्ट हुआ, तो प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, है ना. सो उस तरह से यहाँ पे आपका एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है. और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, क्या आपको लगता है कि प्रेशर ज्यादा होगा थोरैक्स में तो इंफीरियर वेना के और सुपीरियर वेना के से पुल होकर ब्लड वापस ज्यादा आएगा, लाइक जो इंस्पिरेशन में आ रहा था? नहीं आएगा. ओके, इट विल नॉट कम बैक. एंड द मोमेंट इट विल नॉट कम बैक मतलब वो जो नॉर्मल था वो आ रहा है. अबनॉर्मलिटी नहीं है, फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं अभी. पैराडॉक्स तो मैंने चालू ही नहीं किया है अभी, लेकिन ये बेस बनाना बहुत जरूरी था. कंसेप्ट्स तो आपको बेसिक से ही आएंगे. लेट मी टेल यू गाइस, राइट, एंड आई कैन राइट एंड गिव इट टू यू. कंसेप्ट्स तो आपके बेसिक से ही आएंगे. अबनॉर्मल चीज पढ़नी है तो पहले नॉर्मल तो पढ़नी पड़ेगी, है ना. और ये नॉर्मल ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है. यस.
सो दिस इज व्हाट ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। तो जो नॉर्मल ब्लड आना चाहिए ना, ये एरो जो दिखा रहा है ना, वो नॉर्मल ब्लड ले जाएगा ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, क्योंकि श्रिंक हो गया है। अब एक्सपेंड होता तो वॉल्यूम मतलब बढ़ गया, प्रेशर डाउन है तो ज्यादा ब्लड आता। अब श्रिंक हो गया है, प्रेशर ज्यादा है, कम ब्लड आएगा। कम मतलब नॉर्मल ब्लड आएगा। सो द मोमेंट इट विल ब्रिंग द नॉर्मल ब्लड, क्या हो जाएगा? आपको लगता है ये सेप्टम पे अभी प्रेशर आएगा? ये जो दो एरो बताए, लगता है आपको? नहीं होगा। तो सेप्टम अपनी जगह पे रहेगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी साइज नॉर्मल रहेगी। ये जो नीचे के तीन एरो दिख रहे हैं ना, राइट साइड के ऑब्लिक डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट एंड वर्टिकल डाउनवर्ड, वो भी नहीं होंगे क्योंकि नॉर्मल ब्लड आ रहा है ना राइट वेंट्रिकल में अभी, ठीक है। तो सेप्टम अपनी जगह पे रहेगा, ब्लैक कलर का, दिस इज ब्लू कलर का विच इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और उस हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्सपिरेशन है ना, तो एक्सपिरेशन मतलब लंग श्रिंक हुए। लंग श्रिंक हुए तो पल्मोनरी वास्कुलेचर जो डायलेट थी वो श्रिंक हो गई, और जैसे श्रिंक हो गई शुट ब्लड को आगे भेज देगा। पानी के पाइप पे पाँव रखो तो नजदीक का जो ब्लड होगा ना सीधा आगे चला जाएगा, है ना, दोनों तरफ का, पीछे भी चला जाएगा आगे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कंप्रेस नहीं कर रहे, सिर्फ वास्कुलेचर नॉर्मल सिचुएशन में जा रहा है, जो डायलेटेशन था वो नॉर्मल में जा रहा है, तो ब्लड वापस से इजीली आगे आने लगेगा। तो अब पहले नहीं आ रहा था, होल्ड कर दिया था इंस्पिरेशन में, अभी तो नॉर्मल आया। तो नॉर्मल आया तो नॉर्मल पल्मोनरी वेन से राइट लेफ्ट एट्रियम फिल हुआ। यहाँ पे सेप्टम भी नॉर्मल है तो वेंट्रिकल भी नॉर्मल है। तो फिर जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो अब ब्लड नॉर्मल है, तो क्या हुआ? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज नॉर्मल, यस सर नॉर्मल। तो फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ, स्ट्रेच ज्यादा होगा, यस सर ज्यादा होगा। तो फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा, यस सर फोर्सफुली कंट्रैक्ट कर। तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा? डेफिनेटली सर ज्यादा होगा। क्या कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा? यस सर नॉर्मल तक पहुंच जाएगा। इट मींस during expiration you will get 120 mmHg, but in inspiration you will not get. I correlated blood pressure with respiratory system, with respiratory cycles. So during measuring the blood pressure, cough and mercury, and we are pumping it with the mercury and all, but do we consider inspiration expiration at that time? The answer is no. We must understand the basics, we must understand. Okay, and at that time, now what is happening? एक्सपिरेशन के टाइम जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120, और इंस्पिरेशन के टाइम आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से थोड़ा नीचे होगा। दैट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू कार्डियक इंडेक्स, दैट इज बॉडी सरफेस एरिया एंड द डिमांड, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट मायोकार्डियम, लेफ्ट साइड ऑफ द मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। यस, सो बैक टू द ग्राफ। मैंने बोला था ये मैंने गलत ड्रॉ किया है, यस आई एक्सेप्ट, मैंने गलत किया। मैंने 80 डायस्टोल दिखाया, 120 सिस्टोल दिखाया, वापस 80 डायस्टोल, वापस 80 सिस्टोल। लेकिन अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि मान के चलो कि this phase a bit darker and thick so that you can easily identify. मान के चलो this phase is an inspiratory phase, or first let's talk about expiratory. This phase is an expiratory phase. So this first phase is an expiratory phase, तो blood pressure 120 तक पहुंचेगा, definitely पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब इंस्पिरेटरी फेज चालू हुआ यहाँ से, ठीक है। I'll show you in a red pen. मान के चलो कि आपका ये इंस्पिरेटरी फेज चालू हुआ, this is your inspiratory phase. तो क्या लगता है आपको? See, this is your expiratory phase, this is your inspiratory phase. I'll make a note of that. E, this is E, expiration का E, and this is inspiration का I. So I don't want any confusion amongst you people. So एक्सपिरेशन में तो 120 तक पहुंचता है, इंस्पिरेशन में पहुंचता है। ये डायग्राम को याद कर लो, पुश कर रहा है, ब्लड वापस नहीं आ रहा है, लंग में होल्ड करके रखा हुआ है बिकॉज वासोडाइलेटेशन है, ज्यादा ब्लड लंग्स में ही रहेगा क्योंकि गैसेस एक्सचेंज भी इंस्पिरेशन में करना है ना, तो ब्लड
ज्यादा लंग्स में रहेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, क्योंकि उसको गैसेस एक्सचेंज भी करना है, तो वो ज्यादा फटाफट आगे नहीं जाएगा. सो ड्यू टू पल्मोनरी वास्कुलेचर गेट डायलेट, कंप्लायंस की वजह से ब्लड वहीं पे रहता है. तो वेनस रिटर्न जो है वो यहाँ पे अब लंग्स से वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में नहीं आएगा, और यहाँ पे ये सेप्टम पुश हो रहा है, तो वॉल्यूम भी नैरो हो चुका है, तो कार्डियक आउटपुट इज लेस. तो क्या वो 120 आएगा? नहीं आएगा. नाउ आई एम शोइंग द करेक्ट डायग्राम. सी, द करेक्ट डायग्राम इज, I hope the first concept what I'm evolving for you guys is now come to you. This is 80, this is 120, and I'm coming up with the expiratory phase first. First मैं expiratory phase पे आऊंगा. So diastole से हो जाएगा systolic blood pressure 120, क्योंकि एक्सपिरेशन में ऐसा ही होता है. फिर वापस से 80 जाएगा, एक्सपिरेशन चल रहा है तो 120, वापस से नीचे आएगा, एक्सपिरेशन अभी भी चल रहा है 120, वापस से नीचे आएगा. ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन. तो 120 पहुंचेगा गाइस? नो. इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन. सो क्लियरली यहां पे मैं आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखाता हूं. This is the line of demarcation where you can see that the graph has gone bit down, not up to the 120. Can you see this? The graph has gone down during inspiration. ये ऊपर inspiration है, ठीक है? तो graph has not reached up to the 120. 120 पे graph नहीं पहुंचा है. 80 से diastolic नीचे जा रहा है, but ये नीचे है, ठीक है? So this is the, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये शायद अभी ना 114 या 116 के पास है. ये शायद अभी 114 या 116 के पास है, मतलब 5 to 6 और 7 mmHg ब्लड प्रेशर में गो डाउन. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 5 to, ये मैंने यहाँ पे डिमार्केशन दिखा दिया 120 के नीचे. ठीक है, सो थोड़ा ब्लड प्रेशर डाउन जाता है अराउंड 5 to 6 mmHg, ज्यादा नहीं. ठीक है, तो नॉर्मल है, वो मेरे में भी होता है. अगर भाई मैंने इंस्पिरेशन किया तो मेरा ब्लड प्रेशर भी 114, 15 या 16 हो सकता है, नथिंग टू वरी. लेकिन जैसे मैंने एक्सपिरेशन किया 120. सो इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, expiration. So this is what happening in our life normally, physiological. So इसको क्या बोलते हैं पता है guys? Make a note of that. Now I'm making a strong statement for you guys. In a normal individual's life, during the inspiratory and expiratory phase of the respiratory cycles, the blood pressure gets fluctuated around 5 to 6 mmHg. Specifically, the respiratory fall, मेरे वर्ड्स लिखो, अच्छे से लिख लो, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो लिख लो. The respiratory fall of systolic pressure. Respiratory, उसमें भी क्या? Inspiratory fall. ठीक है, so inspiratory, ये है ना inspiration, inspiratory fall of the systolic blood pressure is around 4 to 5 mmHg, and it is called as a physiological drop of the blood pressure. I repeat, physiological drop of the blood pressure means we are normal. यहाँ तक जो भी मैं चलाया अभी तक नॉर्मली चला रहा हूं. मैं पैराडॉक्स अब आऊंगा, है ना? तो क्योंकि पैराडॉक्स इसके ऊपर है इसलिए. So I repeat the statement. During the respiratory cycle, the inspiratory fall of the systolic blood pressure around 4 to 5 mmHg
is normal in all individual is called as an physiological drop in the blood pressure. Physiological. Now, next statement. During the respiratory cycle, ये लिख लेना, ये तो लिखना ही है आपको, ठीक है? During the respiratory cycle, in the inspiratory phase, during the respiratory cycle, in the inspiratory phase, if the inspiratory fall in the systolic blood pressure is more than 10 mmHg. Systolic fall in the blood pressure is more than 10 mmHg or greater than 10 mmHg is in capital and bold in an inverted comma. We are distinguish pulses paradoxes. We are distinguish pulses paradoxes. Yes, guys. I come again. During the respiratory cycle, in the inspiratory fall of the systemic blood pressure, if it is greater than, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 5 to 6 mmHg है, normal है. If it is greater than or more than or drastically getting decreased more than 10 mmHg, then we are distinguish this paradoxical pulse. So that condition is called as a paradoxical pulse. That condition. In this way, I would like Dr. Shagun, sir, if you can hear me. Dr. Shagun, sir? Yes, yes. Yes, sir, if you can hear the pulses paradoxes definition, what European Society of Respiratory, what this Definitely, the current definition of pulses paradoxes says a fall of systolic blood pressure of more than 10 milligram of mercury during the inspiration phase is called abdaya or paradoxical pulses. And the same thing you have told us, that is the systolic blood pressure fall during the normal respiration, that is normal into the part, that is called the physiological drop is called. You are correct, and it is the European definition from the latest journal of European Respiratory Journal. Thank you, sir. Thank you for supporting. Yes. So yes, sir, you can mute now, and thank you for the support, sir. So yes, guys. So European Thoracic Society, the respiratory science, okay, this says this definition, and आप कहीं पे भी देख लो, मैंने ये latest evidence आपको दिखाया हुआ है, ठीक है? It is there with the Shagun sir, it is there with the Harpreet sir also. If you want, you can take it from them. Okay. So this is where I have distinguished the pulses paradoxes, guys. So we have to, when we check the blood pressure, we have to take into an account of respiratory cycles. अगर किसी पेशेंट में अगर रेस्पिरेटरी में इंस्पिरेटरी फॉल ऑफ द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अगर मोर देन 10 mmHg जाता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग इज रॉन्ग. नाउ आई एम कमिंग टू द पैथोलॉजी, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, लेकिन पैथोलॉजी के बाद, ठीक है? सो आई विल एक्सप्लेन द पैथोलॉजी फर्स्ट. ओके, सो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा. द वन थिंग दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल, okay, if I'm checking the pulse, during inspiration, it is very weak. Systolic है ना, मैंने क्या बोला था? सिस्टोल हुआ, बाहर गया, पल्स मिलेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ब्लड बाहर गया, कार्डियक आउटपुट, यहाँ पे रेडियल आर्टरी में आया, पल्स मिलेगा थ्रू दी लेफ्ट सबक्लेवियन, एक्सिलरी, ब्रेकियल, रेडियल अल्नर, रेडियल लैटरल एस्पेक्ट पे, और यहाँ पे हमें पल्स मिलेगा. तो यहाँ पे अब ड्रास्टिकली फॉल हो रहा है. तो do you really think that you will get the normal pulse over here? Okay, so यहाँ पे जब आप पल्स चेक करोगे, ये सिर्फ एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है, पल्स के लिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत जानने को मिले, जस्ट फॉर एन नॉलेज. इट इज नॉट रिलेटेड टू पल्स. ओके, सो अगर आपको मतलब एक सिंपल सा मैं अगर यहाँ पे आपको चेक करूंगा, तो क्या डू यू रियली थिंक दैट यू विल गेट द रेडियल पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इफ ड्रास्टिकली फॉल ऑफ द ब्लड प्रेशर? नो, बट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन यू विल गेट दैट. During expiration you will get the pulse, but during inspiration if it is drastically fall, ये मैंने normal बताया, ये तो मैंने गलत ड्रॉ किया था आपको समझाने के लिए. सही ये है ना? So ये
जैसे ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा, you will not get the pulse in inspiration, but you will get the pulse in expiration. So you, when you check the pulse in a cardiac patient, you have to silently, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आप रेस्पिरेशन भी चेक कर रहे हो, तो साइलेंटली यू हैव टू ऑब्जर्व द abdominal bulging, bulge out. आपको पता बनना है पल्स में इंस्पिरेशन में सुन रहा हूँ कि एक्सपिरेशन में सुन रहा हूँ. आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रिप इट ऑफ. पेशेंट को बोलो कि मुझे एग्जामिनेशन करना है, प्लीज स्ट्रिप इट ऑफ. गाइस थिंक, बेसिक्स कंसेप्ट से मैं अब आपको पैथोलॉजी पे लेके जा रहा हूं. बेसिक से चालू किया था, ग्राफ पे बताया, डेफिनेशन डिफाइन किया, अब नाउ किस में आपको दिखेगा, और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पल्स आप जैसे चेक करते हो, सो इंस्पिरेटरी में ड्रास्टिकली फॉल ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यू विल नॉट फाइंड अ पल्स, बट इट मींस एक्सपिरेशन में आना जरूरी है. इट मींस एक्सपिरेशन में आना जरूरी है. अगर एक्सपिरेशन में वापस आया और इंस्पिरेशन में नहीं सुना दिया, यू हैव टू थिंक फॉर द पल्सेस पैराडॉक्सिस. Write and give it. I can write and give it to you. I'm very much confident in this. You have to think for the pulses paradoxes. And one more thing, guys. During expiration, if the pulse is not coming back, understand the story is something different. It is not pulses paradoxes, because expiration में भी नहीं आ रहा है वापस. It is not coming back into the expiration. So story is something different with the patient. Maybe cardiogenic shock or third degree heart block or anything else. Okay, so you have to go for a CPR or AD defibrillator or whatsoever you can do that. That is something a different story. Let's keep the things apart. But if inspiratory you don't feel the pulse, and during expiration if you feel the pulse, you have to think from your brain it is pulses paradoxes. If you don't get the pulse in the expiration also and inspiration also, the story is something different. So clinically you have to judge it. है ना. फिजियो को ये क्लिनिकल ना अपने टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए, ब्रेन पे होना चाहिए ना, आपके रिफ्लेक्सेस में होना चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन ले रहे हो, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वेरी स्ट्रांग टॉल चिन अप एंड देन टॉक आई टू आई इनटू द कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियन और एनेस्थेशियन और ICU intensivists that yes, I know, don't underestimate me, right? So please guys, please do hard work, right? बेसिक्स कंसेप्ट. तो अब मैं आपको ये पल्सेस पैराडॉक्सिस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी वो समझाऊंगा और कैसे इवॉल्व होता है. ठीक है, तो अब मैं आता हूं कंडीशन पे. द मेजर कंडीशन इन विच द पल्सेस पैराडॉक्सिस दैट यू विल सी इज cardiac tamponade, the best condition that ever one can have to observe the pulses paradoxis. So here I am going to draw a sad diagram, a very sad heart, I would say. Why heart sad? Why heart is sad? Okay, see, this is the heart. This is the interventricular chamber and septum. So above to atrium, below to ventricle. Now this is just a functional diagram, not anatomical. Okay, so and then my green pen is troubling me. Nevertheless, this is pericardium. This is your pericardium. Okay, and this pericardium is filled with the fluid in cardiac tamponade. This pericardium is filled with the fluid in the cardiac tamponade. So this is the fluid that one must identify. Okay, so this is the fluid. Now see, I come again. This is the heart, sad heart. क्यों sad heart अभी बताऊंगा. ठीक है, outer layer, this is a pericardium in which there is enough fluid. Now the matter of fact is what is happening, this fluid is compressing both the ventricle from the bottom, from here. It compressing, this fluid is giving pressure over the ventricle over the both the side. So here I will show you the pressure.
So here is the pressure coming all the way from the fluid over the right and left ventricle. Guys, please, if you are with me, keep drawing the diagrams. Okay, I hardly take 15 minutes or 20 minutes. Please guys, will be with me. Okay, so again, see, it is compressing from all the side. Yes guys, and hence what is happening, see, because of the severe compression, because of this severe compression, now what is happening, see, I'll explain. So yes, this is the cardiac tamponade. See, can you see? From all the direction, it is pushing the ventricle, and hence it is very sad. Okay. So what is happening now? Due to this pressure, okay, now ventricular filling is getting difficult. During this pressure, देखो प्रेशर नहीं होता तो वेंट्रिकुलर फिलिंग अच्छे से हो पाती, क्योंकि प्रेशर नहीं है. अब यहाँ पे प्रेशर की वजह से द एक्सटर्नल पॉजिटिव प्रेशर विच इज देयर इन द pericardial sac, right, which is fluid collected in the pericardial sac, so called as in cardiac tamponade. Okay, but this is not an actual definition, just a functional I'm telling you. Actual definition is different. So that fluid collection, okay, this compressing the both right and right ventricle and not allowing blood to come down. Okay, but अब याद करो, during inspiration मैंने क्या बताया था, during inspiration more amount of blood in the right ventricle is coming. Okay, more amount of blood which is there in the right ventricle, तो वो उसको तो feel होना ही है, ठीक है, even though the cardiac tamponade is there, okay, उसको तो feel होना ही है, ठीक है. So because of that, what is happening, okay, just a moment. So because of that, what is happening, even though the cardiac tamponade is giving the pressure, okay, even though the cardiac tamponade is giving the pressure, the blood will definitely come down, even though the cardiac tamponade giving the pressure over the right and the left ventricle, okay, but still the blood would love to come down, okay, because the higher, you know, inspiration, there is a higher filling in the right atrium. So जैसे blood नीचे आता है ना, ठीक है, so this is the blood, okay, this is the blood column, and now see, I'll explain. A major concept, okay, a major concept. See, a major amount of blood is coming and this is pressurizing. A major amount of blood is coming and this is pressurizing it. That means a pressure is coming over the right ventricle and the left ventricle as well. Pressure is coming over the right ventricle as well as the left ventricle. Okay. आपको क्या लगता है? What do you think? Right ventricle compress होगा due to this pressure और लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्रेस होगा ड्यू टू दिस प्रेशर. प्रेशर इक्वली सब जगह पे, मान के चलो इक्वली राइट एंड लेफ्ट साइड पे ड्यू टू दिस फ्लूइड. कौन सा ज्यादा कंप्रेस होगा? द आंसर इज राइट वेंट्रिकल. क्यों? याद करो, यहाँ पे फिजिक्स मतलब फिजियोलॉजी में बताया, थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर देन द राइट, राइट, ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर देन द राइट. तो यहाँ पे थिकनेस बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो दिस कैन सस्टेन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, बट दिस विल नॉट सस्टेन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. ओके, दिस विल नॉट सस्टेन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हार्ट, ओके, विल कंप्रेस इनर एस्पेक्ट. देखो मैंने अंदर की तरफ थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ बताया हुआ है वॉल ऑफ द right myocardium. ठीक है, can you see this? Can you see this? Yes. Okay. And top on that, due to this compression, okay, due to this compression, now what is happening? Blood जो है वो नीचे आ रहा है, तो blood का pressure, और ये जो
राइट वेंट्रिकल अंदर की तरफ पुश हुआ ना, तो ये क्या करेगा, सेप्टम को पुश करेगा। क्या करेगा, सेप्टम को पुश करेगा। देखो यहाँ पे क्या चीज थी, जैसे ब्लड ज्यादा आता था ना, तो इट हैज एन वे टू स्ट्रेच। कहाँ पे, राइट साइड पे, ऑब्लिक राइट, डाउनवर्ड, ठीक है, इसके पास रास्ते थे। अब यहाँ पे रास्ते है क्या उसके पास, बाहर की तरफ निकल सकता है, राइट साइड नहीं, नीचे की तरफ निकल सकता है नहीं, वर्टिकली ऑब्लिकली निकल सकता है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनेट है। तो अब तो उसको अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मस्कुलेचर कम होता है कंपेयर टू राइट, तो उसको अंदर जाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, सेप्टम को अब प्रेस करेगा। जैसे यहाँ पे सेप्टम को प्रेस कर रहा था ना, वैसे अब यहाँ पे सेप्टम को प्रेस करेगा। क्यों, क्योंकि मेजर अमाउंट ऑफ ब्लड हैज नाउ कम हियर, मेजर अमाउंट ऑफ ब्लड हैज कम हियर। ओके, ब्लू पेन से दिखा रहा हूं बिकॉज इट इज impure blood. Okay, so because of that what is happening, ये जो कॉलम ऑफ द ब्लड जो है ना, जो मैंने आप वेंट्रिकल में दिखाई, वो क्या करेगा पता है, इस राइट वेंट्रिकल को बाहर की तरफ पुश करेगा तो ट्राई करेगा, लेकिन क्या कार्डियक टेम्पोनेंट होने देगा, नहीं होने देगा ना। तो अब ये कॉलम पूरा का पूरा जोर कहां पे निकालेगा, पूरा का पूरा स्ट्रेंथ कहां पे निकालेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। तो अब देखो सेप्टम की क्या हालत होती है, द सेप्टम can you see guys, due to the this tamponade pressure right ventricle shifted because उसकी मस्कुलेचर कम है कंपेयर टू राइट। राइट को तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ राइट से हो रहा है, लेफ्ट को कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसका मस्कुलेचर ज्यादा है। तो ये जैसे अंदर कंप्रेस हुआ, टॉप ऑन दैट ब्लड ऊपर से नीचे ज्यादा आया, सी दिस एरो, तो क्या करेगा, इसको तो बाहर की तरफ नहीं शिफ्ट करता क्योंकि टेम्पोनेट का प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू दिस प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अब ब्लड पूरा को पूरा ब्लड कहाँ पे एग्जर्ट करेगा। देखो ये जो ब्लड आया था ना, ये सारी डायरेक्शन में एग्जर्ट करता था, लेकिन अब ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्लड नीचे इस तरफ तो नहीं आ पाएगा, और यह क्या करेगा, सेप्टम को पुश करेगा पूरा का पूरा। एंड हेंस अब देखो द कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, सी द कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। So the moment the cavity of the left ventricle is drastically decreased, the volume has, you know, the area of the left ventricle is drastically decreased. ठीक है, मैं उसको थोड़ा डार्क कर देता, you will be able to identify. Yes guys, now last thing is coming, don't worry, I am about to finish. Okay, be with me please. सी मैंने डार्क कर दिया है थोड़ा, सो दैट आपको लेफ्ट वेंट्रिकल एकदम पतला सा दिखेगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट अब आपको क्या लगता है, वेनस रिटर्न पल्मोनरी से जो आएगा कितना आएगा, वेरी लेस, ठीक है। अब इतने में ब्लड कार्डियक आउटपुट कितना जाएगा, वेरी लेस। So stretchability is less, end diastolic volume is less, cardiac pumping is less, stroke volume is less, and hence eventually cardiac output is less. The moment the cardiac output is less, definition याद करो, सगुन सर ने अभी बोला था, मैंने अभी इन्वॉल्व किया, कि जब drop in the systolic blood pressure during the inspiratory cycle, क्योंकि ये inspiratory cycle पे blood ज्यादा आया था, इंस्पिरेटरी साइकिल पे, सो ड्रॉप ऑफ द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पिरेटरी साइकिल्स, ये तो 4 to 5 mmHg था, लेकिन अब आपको लगता है कि ये 4 to 5 mmHg जो कहते हैं मोर देन 10, yes it is more than 10, the moment it is more than 10 is called as an pulses paradoxis. So yes, this cardiac tamponade is a classical condition to identify the pulses paradoxis, and the graph will be something like this. For example, this is above systolic, ठीक है, डोंट वरी, आपको दिखेगा, ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, एंड दिस इज diastolic pressure. Let's consider this is 120, this is 80, अब थोड़ा लार्ज दिखा रहा हूं क्योंकि नीचे है तो, ठीक है। एंड देन अब मैं आता हूं आपके पास विथ, यस, एक्सपिरेशन पहले दिखाऊंगा क्योंकि ऊपर एक्सपिरेशन है, तो एक्सपिरेशन जो है वो तो नॉर्मल आएगा, ठीक है।
So expiration 120, 80. Expiration 120, 80. Expiration 120, 80. अब problem. Inspiration. Drastically decrease in the systolic blood pressure during the inspiration. Drastically decrease in the systolic blood pressure during the inspiration because of the cardiac tamponade. This is how the left ventricle behaves because of the right ventricular push and the inspiratory overvolume of the blood and the cardiac tamponade pressure. And this volume of the blood pushes the septum towards the left side. And due to the inspiration, यहाँ पे blood hold होता है during gaseous action in the lungs. तो यहाँ पे तो वैसे भी left ventricle में कम आने वाला है और ये pressure ये push भी इस तरह से हो गया. Eventually, very drastically, the blood pressure reduced during the respiratory cycle of inspiration. This much goes down. उसको मैं थोड़ा अब अगर dark करके दिखा दूं, ठीक है, with the red pen. So that is the line of, Sagun sir, if you can hear me, you can please check one more, I have sent the diagram. Sagun sir. I have sent you WhatsApp one diagram, if you can see. Yes, Mehul, I'm seeing. See, now, is it matching, sir? Yeah. Is it matching? Thank you, sir. Thank you so much, sir. So this is the demarcation that more than 10 mmHg of blood pressure has fall down during the inspiration of the respiratory cycle, and hence we can distinguish the pulses paradoxes in this situation. Am I clear? So this is the clinical, but last now 10 minutes. अगर मैं ना आपको मैंने मतलब जो पल्स वाली बताई थी ना बात, वो तो नॉर्मल है, वो जाने दो, उसका तो इतना आप नहीं वो नहीं कर पाओगे. क्लासिकल साइन दैट हाउ टू पिक द पल्सेस पैराडॉक्सेस, अगर मैं वो नहीं बताई ना तो ये क्लासेस कोई काम की नहीं, क्योंकि क्लिनिकली आपको आना चाहिए पल्सेस पैराडॉक्सेस, क्लिनिकली कोरिलेट आपको करना चाहिए. चलो समझ में तो आ गया कि ये कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ क्या होता है. ये तो एक मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बेसिक्स, जो मैं खुद बोला कि वो रॉन्ग है, राइट ये है और ये अबनॉर्मल है. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉर्मल, दिस इज अबनॉर्मल. ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज बताई, लेकिन जब तक मैं आपको ये कैसे पल्सेस पैराडॉक्सेस को पिक करना है, कैसे उठाना है, मतलब किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, जब तक मैं वो नहीं बताता ये क्लास कोई काम की नहीं है आपकी. ठीक है. सो नाउ फाइनल 10 मिनट्स. सी हियर, consider this is the sphygmomanometer. Okay, consider this is the sphygmomanometer. Okay, it has all the here the parameters for the mercury, which is showing in the green line right now. Okay, so this is the parameter for the mercury. Okay, and this is the, consider that a cuff with its tube. Okay, that tube is eventually come out, okay, with the help of pump. With the help of pump. ठीक है. So यहाँ पे ये tubes मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, this is our tube, connecting tube. These are all to understand, to make you interesting. I'm drawing this. Okay,
सिग्नोमैनोमीटर ऐसा नहीं होता है गाइस, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मत करना, राइट कि सर ये ऐसा कैसे होता है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। Okay, so here I have drawn this sphygmomanometer. This is the next one small green line. Okay, this green line is for the parameters, and this is the curve, and then it is the, you know, the pump through which we are going to, you know, increase the pressure. Now this sphygmomanometer, okay, in my left, in my left brachial artery, okay, sorry, right, I'm sorry, राइट साइड यहाँ पे कफ लगा दिया और ब्रेकियल आर्टरी से हम पल्स मेजर कर रहे हैं। अब मुझे अच्छे से सुनना गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छी टेक्निक में आपको इवॉल्व करने वाला हूँ। ब्लड प्रेशर हमने 120, 130, 140 तक यहाँ पे जो पंप है ना, वो पंप से इंक्रीज कर दिया, पंप करके 140, 50 तक ले लिए और मर्क्यूरी ऊपर चला गया, ठीक है। अब कंसीडर करो कि पेशेंट डिजीज वाला है, मतलब उसका नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान के चलो 150 है सिस्टोलिक, क्योंकि 120 ये सब तो वगैरह बहुत हो गया, नॉर्मल हो गया। अब 150 ब्लड प्रेशर ऐसा मान के चलो, टेंटेटिवली स्टैटिस्टिकल, तो वो 150 तो मैंने क्या बढ़ाया, 160, 170 तक बढ़ा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी नॉर्मली हम क्या करते हैं, वाल ओपन किया, द मोमेंट हमने वाल ओपन किया किसका, दिस पंप, ठीक है, एंड देन वी आर स्लोली ट्राई टू रिड्यूस द प्रेशर डाउन, ठीक है। सो नाउ मर्क्यूरी is slowly from upper side it will come down, 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 down और down। लेकिन जब वो 170 से 165, 160, 162, 100 and then sorry 160, then 155, 152, 151 and पेशेंट का मैंने कितना बताया था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150। तो जैसे 150 पे सिग्नोमैनोमीटर पे वहां पे जब मर्क्यूरी आता है, आपको फर्स्ट क्रोटोकॉफ साउंड सुनाई देगा। जो हमें साउंड सुनाई देता है उसको बोलते हैं क्रोटोकॉफ साउंड, साउंड, ओके, क्रोटोकॉफ साउंड, ठीक है। तो वो साउंड कैसा होगा, आपको जब सुनाते हैं ना, ब्यूटीफुल स्टेथोस्कोप डालते हैं ईयर प्लग में, ठीक है, मतलब ईयर में डालते हैं उसका ईयर प्लग, और फिर हम सुनते हैं यहाँ पे बेल ऑफ द, यू नो, डायफ्राम एंड बेल के साथ ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो क्या होता है, द 150 पे जो आपको सिस्टोलिक वाला जो साउंड आएगा ना, वो आएगा टप 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 टप। तो जो फर्स्ट साउंड टप जो आया ना, उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, दैट द फर्स्ट साउंड व्हिच केम इज द सिस्टोलिक। लेकिन मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मेरा लेक्चर याद करो, क्योंकि कितने लोग ब्लड प्रेशर के टाइम अपना रेस्पिरेटरी को भी चेक करते हैं व्हाइल चेकिंग द ब्लड प्रेशर इन अ कार्डियक पेशेंट। अगर कोई और पेशेंट है, फीवर वाला है, मलेरिया वाला है, ये है, तो चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्डियक पेशेंट में तो ऐसी मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। यू हैव टू, व्हाइल टेकिंग अ ब्लड प्रेशर, यू हैव टू ऑब्जर्व द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोथ। तो अब मान के चलो कि कोई पेशेंट है, ठीक है, अब उसको कार्डियक टेम्पोनेट पॉजिटिव है और उसका हम चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है, ये अब मान के चलो कि 120 नहीं 150 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब 150 लिखता हूँ, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक्स लिया है ना हमें कि हाइपर ब्लड प्रेशर वाला, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, ठीक है। तो 150, तो आपको जब पहला साउंड आया तब, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पे आया कि एक्सपिरेशन पे आया, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन पे आया कि एक्सपिरेशन पे आया। नाउ यू विल कैच मी, सर इंस्पिरेशन पे तो नहीं आ सकता है 150, वो तो डाउन है ना, है ना। तो ये जो आपको साउंड आया वो आपको कहाँ पे आया, एक्सपिरेशन पे। सी माय ग्राफ, you got the sound in expiration at 150 mmHg, ठीक है। तो तब वो जो फर्स्ट साउंड आया दैट इज योर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। लेकिन जैसे आप ऑब्जर्व करोगे ना इंस्पिरेशन के टाइम, तो साउंड नहीं होगा, साउंड नहीं होगा। यू हैव टू केयरफुली लिसन, यू हैव टू केयरफुली, यू हैव टू लिसन केयरफुली, ठीक है। तो इंस्पिरेशन पे साउंड नहीं, लेकिन वापस जब एक्सपिरेशन होगा ना, तब इंस्पिरेशन नो साउंड, एक्सपिरेशन तब। अब थोड़ा मर्क्यूरी वापस से डाउन करो, ठीक है। तो जैसे यहां से प्रेशर डाउन कर रहे हैं, कफ से प्रेशर डाउन कर रहे हैं, प्रेशर वापस से नीचे 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 और नीचे आया, और एक ऐसी जगह पे आया कि ये जो बेंचमार्क है ना, ऐसा मान के चलो कि ये 130 है, ये क्या है 130, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे ये
पंप से वाल को थोड़ा और रिलीज किया, मर्क्यूरी नीचे आ रहा है तो 140, ठीक है, देन 135, 132, 131 मर्क्यूरी आया, और जैसे 130 आया ना तो आपको इंस्पिरेशन में भी टप, एक्सपिरेशन में भी टप, दोनों में टप आएगा, मतलब टप 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 टप, ये सुनाई देगा आपको इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मतलब ये तो है 130 पे तो आने वाला है, ये भी आने लगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, फर्स्ट वाला था 150, फर्स्ट क्रोनोकॉफ जो था K1 इज इक्वल टू 150 यहाँ पे आया था फर्स्ट टप, ठीक है। सेकंड क्रोनोकॉफ साउंड K2 जो आपको 130 पे आया। तो पल्सिस पैराडॉक्सिस मतलब क्या है कि आपके जो सिस्टोलिक प्रेशर में जो डिफरेंसेस आई, तो कितने डिफरेंसेस आई, 150 माइनस 130 इज इक्वल टू 20, which is greater than 10 mmFg, which is greater than 10 mmFg, and hence got it, pulses paradoxis। लेकिन फिर जब प्रेशर कप, ऐसा डायस्टोलिक का क्या होगा, तो जैसे प्रेशर कप पूरा रिलीव करोगे 100, 90, 80, जैसे 80 पे आएगा ना तो साउंड चला जाएगा, जो टप 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 टप, 90 पे आया टप टप टप, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों टाइम पे, लेकिन जो पहला आया ना इंस्पिरेशन पे वो 130 था। सो डायस्टोलिक के लिए प्रेशर डाउन किया हमने 100, 95, 90, टप टप टप, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, टप 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 टप, 80 आएगा ना, कुछ नहीं, मतलब डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक प्रेशर 80, सिस्टोलिक आपका इंस्पिरेशन में 130, एक्सपिरेशन में फर्स्ट आ चुका 150, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 1 प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंसेस निकला 20 mmHg, which is greater than 10 mmHg during inspiratory cycle and hence called as an pulses paradoxis। so ये तो आपको क्लिनिकली आना चाहिए, बीइंग अ फिजियो आना चाहिए आपको, ये है ना, राइट। so you have to pick this, you have to pick this, and last concept that I'm going to explain guys, 2 minutes, not more than that, last concept, if इंस्पिरेटरी फॉल ज्यादा है, पल्स नहीं मिला, देखो 20, 25 mmHg, समटाइम्स 30 mmHg ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक नीचे चला गया, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला गया तो पल्स तो नहीं मिलेगी, 25, 20, 30 mmHg ब्लड नीचे चला गया तो पल्सिस पैराडॉक्सिस सीवियर है, कार्डियक टेम्पोनेट सीवियर है, वॉल ऑफ द दैट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज पुशिंग सो मच हार्ड, ओके, टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इंस्पिरेटरी पल्स आपको नहीं मिला, इंस्पिरेटरी पल्स आपको नहीं मिला, but at the same time keep the stethoscope and check S1 S2, you will get S1 S2, that means what, heart is pumping but pulse is not there, heart is pumping, keep the stethoscope, listen the S1 S2, that is the heart sound, and heart is pumping, okay, heart is pumping, we see the blood pressure also, that 150, 80, 150, 80, 150, so S1 S2 is there, cardiac output is there, blood pressure is there 150 and 20, but still pulse is not there, you have to think for that cardiac tamponade, you have to think guys क्लिनिकली, ऐसा नहीं है कि कोई फिजिशियन चेक करेगा और वही कार्डियक टेम्पोनेट बता सकता है, आप भी कर सकते हो अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो। So yes, this was the last concept that I wanted to explain, and yes, as I before the beginning of the lecture, as I told you, this rehabilitation science, you know, wonderfully they are doing the job, okay, I appreciate the work because you know उनके बहुत सारे ग्रुप में फ्लायर्स वगैरह सब देखते हैं, ऑर्थो पे होते हैं, न्यूरो पे होते हैं, अभी रिसेंट रिसर्च पे किया था, रिसर्च के ऊपर था, ठीक है, तो wonderfully they are doing the rehabilitation science, and bottom of my heart I would like to thanks पिंटू सर जिन्होंने मुझे फर्स्ट कांटेक्ट किया था, हरप्रीत सर जिन्होंने मुझसे बात की कि सर आपको ऐसा कुछ एक हमारे लिए अगर होता है तो डेफिनेटली आई एम ऑल टाइम रेडी फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनली ऑल टाइम रेडी आई एम फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर कलीग्स ऑल्सो। फिर वेरी वेरी मच थैंक्स टू शगुन सर फॉर टेक्निकल सपोर्ट, जो उन्होंने पूरा टेक्निकल सपोर्ट मुझे प्रोवाइड किया, एंड धर्म सर ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल,
है ना धर्म sir, thank you very much. And beginning of the lecture में मैंने बोला था this lecture dedicated to these 4 guys. Thank you sir, I'm done. Very good evening, Dr. Mehul. Thank you for a wonderful explanation on the paradoxical pulse. And I think you made it the most interactive topic that we have seen in many days. And from the question started from the title of your presentation. So does paradoxical pulse is related to the pulse? So the question started from there itself. And Yes. in the mind of students, I think that question was answered by the end very beautifully. And we were waiting for the applied aspect of paradoxical pulse, and you explained it with cardiac tamponade. And later, you also explained how clinically it can be seen. So it is not just a phenomena of theory or textbooks, but also how does it clinically relate to the practice, and how useful it is for all the professionals to know, not only physiotherapy professionals or physicians, but I think everybody should have an understanding of how and why and when this can be seen. So thank you so much for sharing your wonderful knowledge with us, and a colorful presentation. Although you did not use a PowerPoint presentation, but you made it, we did not feel the need for it. Thank you so much. I never use the PowerPoint. I never use. As I told you that, sir, these are my weapons, and I go with this only, sir. And yes, at the end of the session, if someone asks you, pulse's paradox is related to the pulse, the answer is no. It is related to the fall of the blood pressure during the respiratory cycle of inspiratory phase, not expiratory. Right. And if you want evidences, strong evidence is European and American Thoracic Society. Okay, I have delivered to the Harpreet sir also, and I have delivered to the Sagun sir also. If anyone's want, sir, please share them. Definitely, we would share if anybody would be asking. Definitely. Yes. Thank you, Mehul. So, Thanks for a wonderful session. Really, we enjoyed a lot. thank you, sir. Thank you, Dr. so Mehul. much. Thank you. Thank it you, was Dharam really sir. wonderful. And with this thought, we are closing this session. Thank you so much. Yes, sir. Goodbye. Good night. Stay safe. Thank you, sir.